गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं माय फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? गुड आफ्टरनून तरुण, जानवी, प्रतिभा, निकिता, कशिश, सौम्य रंजन, गुड आफ्टरनून। भारत, श्रीकांत्या, पार्थ, कशिश, तन्वी, जयजनैन बेटा, वेंकट लक्ष्मी। कशिश इज आस्किंग सर यूनिट 2 नोट्स आर नॉट अवेलेबल। मैंने अपलोड कर दिए बेटा, आई हैव अपलोडेड बट टुडे आई हैव अपलोडेड टुडे, तो प्लीज चेक कीजिए वो अवेलेबल है। एक बार दोबारा चेक कीजिए। प्रसन्नता, आशुतोष, गुड आफ्टरनून। हनीन, ओमकार, आयुष, आयुषी, अमन, अनन्या, मुकुल, गुड आफ्टरनून। सुनील, संजना, जाकिया, पूर्वा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। किशन, आयुष, गौरव, गुड आफ्टरनून। शिवम, अंकिता, रेतुनिसा, अनमोल, जयेश, आयुष, दानिश्वरन, श्रेया, आयुषी, बोथरा, शिवम, लीजा, साधना, महक, वैष्णवी, पुरंजय, तमन्ना, गुड आफ्टरनून। हर्षिता, आयशा, रितु, श्री, बालाजी, कुणाल, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन बच्चों। ऐश्वर्या, आरपी, कोस्तु, मनमोहन, गुड आफ्टरनून। So it's a time for revision of the second part of unit 1. So without wasting the time, we are going to start the revision. So good afternoon everyone, good afternoon. So first we should have the revision. So in the last class we have discussed the offer and acceptance. So first we start with the offer. A person is said to make a proposal when he signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or action. Very simple definition. Proposal मतलब हुआ एक ऑफर जो किसी को किया जाए इस उद्देश्य के साथ कि सामने वाला उसके लिए हाँ कर दे. And proposal may be for doing something or abstain from doing something. What are the types of offers? One is general offer, offer made to world at large. A specific offer, offer made to a definite person. Cross offer, when two identical offer made to each other. In that case, no offer will be considered, or both the offer will be valid. Counter offer, where offeree imposes condition which have the effect of modifying or varying the offer. It means conditional acceptance. Conditional acceptance is called counter offer. In case of conditional acceptance, original offer is lapsed. खत्म हो जाता है original offer, उसकी कोई वैल्यू नहीं. Standing or continue offer, when public offer is made for certain period, it is normally called standing or open offer. What are the legal rules? Legal rules, it must be with the intention to create a legal relationship, must not be a social agreement. Offer must be certain, definite and unambiguous. Unambiguous मतलब clear. Offer must be communicated to the person to whom it is made. जिसको ऑफर किया गया है उसके पास पहुंच जाना चाहिए, उसकी समझ में आ जाना चाहिए. Must be made with a view to obtain the consent of the offeree. Must be, offer may be conditional but acceptance never be conditional. Must not contain a term non-compliance of which amounts to acceptance. Offer ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका non-compliance acceptance माना जाए. Offer may be specific or general.
Offer may be expressed or implied by the conduct. An offer must be distinguished from invitation to offer. Invitation to offer is the step before the offer, like menu card. Okay, these are not the offer, these are invitation to offer. Statement of price is not an offer. The case of Harvey versus Fassy. Remember, acceptance means a proposal or offer is said to have been accepted when the person to whom the proposal is made and he signifies his assent to the proposal to do or not to do something. क्लियर इतनी बात, जिसको ऑफर किया गया वो चाहे ऑफर कुछ करने के लिए कहा गया हो तो कुछ करने के लिए हाँ होगी, और कुछ नहीं करने के लिए कहा गया होगा तो उस नहीं करने के लिए हाँ की जाएगी. What are the legal rules? It must be absolute and unqualified, unconditional. Remember, no if, no but, only yes. ठीक है? Communication should be to the offerer in the mode prescribed. Remember what was the case? If the acceptance is not in the prescribed mode, then offerer has two options. One, being silent, and that is acceptance is complete. But second option, he must convey to the offeree that your acceptance is not as per the prescribed mode, and please send as per the mode prescribed. Until that, offer will not be considered as accepted. अगर prescribed mode में acceptance नहीं आता है तो ऑफर के पास दो ऑप्शन होते हैं. पहला ऑप्शन क्या है बेटा उसके पास, कि वो इसको चुप रहे और एक्सेप्ट कर ले, तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट मानी जाएगी. दूसरा, वो इन्फॉर्म करे ऑफरी को कि भैया आपका जो एक्सेप्टेंस है वो प्रेस्क्राइब मोड में नहीं आया है, कृपया आप ऑफर को एक्सेप्टेंस को प्रेस्क्राइब मोड में भेजिए. इन दैट केस जब तक प्रेस्क्राइब मोड में नहीं आएगा तब तक एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं मानी जाएगी. राइट? It should be within the time limit. अगर टाइम लिमिट है तो टाइम लिमिट में, if time limit is not mentioned, it should be the reasonable time, and reasonable time depends upon the every situation. Silence is not an acceptance. Acceptance may be expressed or may be implied. The communication, remember, जब भी आप communication के बारे में सोचें, communication of offer और acceptance के लिए, please remember example. Example 4 date you have to learn 1, 3, 7, 10. याद है? याद आया कुछ बच्चों? Communication of offer completed when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. That is third. Communication of acceptance is complete as against the offerer when it is put into the course of transmission to him so as to be out of the power of acceptor to withdraw the same. That is seventh. And communication of acceptance is complete against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer. That is 10. Remember, communication of the acceptance by postage completed as against the proposer when the letter of acceptance is posted, as against the acceptor when the letter reaches to the proposer. Acceptance over telephone, telex, fax completed when the acceptance is received by the offeree and the contract is made at the place where the acceptance is. जहां पर भी acceptance received होगी उसी प्लेस पे माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ. ठीक है बच्चों, यहां तक तो आपका रिवीजन हो गया. नाउ कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस. रिमेंबर, स्पेशल कंडीशंस printed on the back of ticket received, whether in the knowledge of passenger or not, will be treated as accepted by passenger, but there is some exceptions. So exceptions are important than conditions. So please remember all the exceptions. Please learn all the exceptions. In the following cases, acceptor will not be liable. First, conditions are contained in the document which is delivered after the contract is complete. Second point, condition limiting the rights of acceptor are not brought to the notice of acceptor. And third one is document does not give the reasonable information or reasonable notice on the face of the document that it contains some special conditions. Revocation of offer and acceptance. This question may be asked for 5 to 6 marks in your exam diet question. So please learn. This is an important question. Please mark. Communication by notice.
by lapse of time if offer is not accepted within the prescribed time, non-fulfillment of condition which is required in the acceptance, death or insanity of the offerer if counter offer is made, if of acceptance is not according to the prescribed mode, or if law is changed after making the offer. So this was the revision. I think all of you have done. Please prepare this sheet, then we will meet the today's special guest. Okay. महक is saying sir आप great हो, आप बहुत से समझाते हो, thank you बच्चों, thank you so much मेरे लल्लन, good मेरे बच्चों, मेरे thank you so much. चलो आगे बढ़ते हैं, बस समझ जाओ तुम, ये मेरे लिए काफी है, तुम्हारी समझ में आ गया, तुम्हारा एग्जाम अच्छे से निकल गया, that's enough for me. तो बेटा ये प्लीज ये शीट प्रिपेयर करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट. One thing, please don't need to send the answer to me. This is self assessment test. ठीक है, एक रिवीजन कर रहे हैं कि जो हमने पढ़ा वो हमें याद है कि नहीं है. स्टार्ट करते हैं बच्चे. तो टुडे स्पेशल गेस्ट इज दामोदर भाई. तो मिस्टर दामोदर भाई वेलकम, एंड प्लीज गिव ऑल द करेक्ट आंसर. गलती मत करना भाई, ठीक है बच्चों. लेट्स स्टार्ट. So this is the first question before you. Which of the following is not the legal requirement that is essential element of a valid offer? Valid offer का कोई इसमें से एक चीज है जो legal requirement नहीं है. It must be communicated to the offeree. It must be made with the view to obtain offeree's consent. It must express offers final willingness. It must be made to specific and not to public at large. कोई ऐसी चीज यहाँ पर गलत है, you have to select. So the answer is D. It must be made to specific, not to name, may be to public. It may be to public or may be to specific person, right? Next one. A journal offer of a continuing nature can be accepted by the first 100 people, the first 10 people, any number of persons until it is retracted. One person only who first accept the offer. Shubhi, Isha, Aditya, Bitan, please don't send the answers. जरूरत नहीं है, आप अपना चेक करो स्कोर क्या रहा. ठीक है ना बेटे, out of 10. I think everybody knows the answer of this question. The answer is D. Any first person who first accept the offer, right? Third one is the term acceptance in legal terms is defined in section 2 clause A, section 2 clause B, section 2 clause I, section 2 clause F. The answer is section 2 clause B. Next. Fourth question.
Which of the following is not the legal requirement of a valid acceptance? Which of the following is not the legal requirement of a valid acceptance? Not. It must be communicated. It must be absolute and unconditional. It must be accepted by the person who has the authority to accept. It must be presumed from silence if not communicated within the specified time. Please read carefully, then answer. The answer is beta. Option D. The acceptance cannot be presumed from the silence. Right? आगे बढ़ते हैं. A by letter. Please read this example carefully. A by letter, dated 25th December 2020, offers to sell his house to B for rupees 50 lakhs. The letter reaches B on 27 December 2020, who posts his acceptance on 28 December 2020, which reaches A on 30th December 2020. In this case, the communication of offer is complete. Communication of offer is complete on 25th December, 27 December, 28 December, 30th December. दो क्वेश्चन है बीच में एक बच्चा कह रहा है सर एग्जाम में एमसीक्यू रहेगा. नहीं बेटे, एमसीक्यू नहीं है एग्जाम में. आई हैव डिस्कस सो मेनी टाइम्स एंड मिस्टर किशन इज आस्किंग सर एक्सेप्टेंस का सेक्शन 2B कैसे होगा. वो तो प्रॉमिस का बेटे. सेक्शन 2 क्लॉज बी में प्रॉमिस और एक्सेप्टेंस दोनों डिफाइंड. प्लीज चेक करिए एक बार उसको. द आंसर इज 27 December, राइट. ऑफर का सेक्शन 2 क्लॉज ए है and acceptance is mentioned in section 2 clause B, and again promise is also mentioned in that clause, right? Next, an offer may be revoked by the offerer at any time before the letter of acceptance is posted by acceptor, received by offerer, read by offerer. None of these. The answer is option A, when the letter is posted by the acceptor. बीच में एक क्वेरी है, जस्ट आई एम टेकिंग. बेटे लेटर 27 को पहुंचा मिस वेंकट लक्ष्मी. बेटे द लेटर वाज रीचेस ऑन 27, comes to the, so it comes to the knowledge in to the offeree on 27. So 27th date is the date of communication of offer. Revoke means cancel होना बेटे, cancel होना. Seventh, the legal rule relating to the revocation of acceptance is that it can be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete against. Please read this question carefully. I am reading once again. The legal rule relating to the revocation of acceptance is that it can be revoked
at any time before the communication of acceptance is complete against the acceptor, the offerer, acceptor's family, offered family. Acceptance कब तक रिवोक किया जा सकता है? The answer is acceptor. Acceptor can be revoked before the communication of acceptance is completed against the acceptor. यानी कि जिस तारीख को पहुंच रहा है उससे पहले ही वो रिवोक किया जा सकता है, उसके बाद रिवोक नहीं हो सकता. अगर एक बार ऑफरर के पास पहुंच जाए तो वो रिवोक नहीं किया जा सकता. राइट. 8th question. A space is one which is made to public at large. A specific offer, general offer, public offer, universal offer. The answer is very simple. It is general offer. Ninth point, where the time is fixed for acceptance of the offer and it is not accepted within the fixed time, then offer automatically lapses on the expiry of fixed time. Offer can be accepted by paying penalty. Offeree loses his right to become a party to any contract in future. Offer lapses but only with the permission of the court. Aisha is asking, sir, general offer can be accepted by only one person. Definitely, बेटा एक offer होगा तो एक जना accept कर सकता है. One offer can be accepted only by one person. Once the offer is accepted, there is nothing to accept. The answer is A. Offer automatically lapses on the expiry of the fixed time. The person making the offer is known as offerer or promiser, and to whom it is made is known as acceptor, acceptor for owner, offeree or promisee. Please correction कर लीजिए, offeree or promisee, contracting party. To whom offer is made? The answer should be C. The offer to whom is made is called offeree or promisee. Then after acceptance, it becomes the acceptor. So this is the last point. 7th में issue था एक बच्चे का. हाँ बेटा, ऑफर एक्सेप्टेंस कब रिवोक किया जा सकता है? प्लीज रिमेंबर. देखिए मैं क्वेश्चन को लेके आ रहा हूँ, ये वाला 5th क्वेश्चन एक बार देखो सब लोग, इससे अपन वाला कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे. राइट. देखिए 20 the letter was sent on 25th December and reaches on 27th to the offeree. So communication of offer is completed on 27th when it comes to the knowledge of the proposee or offeree. भाई ऑफर आपने किया 25 तारीख को, पहुंचा कब? 27 तारीख को. तो जिसको हमने ऑफर किया उसकी नॉलेज में कब आया? 27 को. तो ऑफर का कमीशन कब माना जाएगा? 27 को. एंड ही सेंड द एक्सेप्टेंस ऑन 28. तो जो ऑफर है ही कैन रिवोक हिज ऑफर बिफोर 28 because on 28 the acceptance is completed against the proposer, right? And 30th December when the acceptance reaches to the offerer, then it is called the communication of acceptance against the acceptor. ठीक है.
तो एक्सेप्टर कब विड्रॉ कर सकता है अपना एक्सेप्टेंस? बिफोर 30th December. I think this is the clear concept. So Lucky Kumari is saying, sir, all my answer correct. Congratulations, beta. Again, Sarthak got 10 on 10. Good. Manmohan, Ritu got 8. कोई नहीं, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं. आई थिंक दैट खत्म हो गया टेस्ट का टाइम. जानवी गॉट 10 on 10. कॉन्ग्रेचुलेशन. चलो अब अपन पढ़ते हैं, अपने आते हैं अपने टॉपिक पर. जो आज का हमारा टॉपिक है कंसीडरेशन समथिंग इन रिटर्न, राइट? So let's start the topic. We have already discussed the unit 1. मेरे ख्याल से यूनिट 1 तो क्लियर हो गया बच्चों, सब लोगों को कोई इशू नहीं होना चाहिए. I am again saying in the 10th lecture I will discuss with you the presentation pattern. भाई आप लोगों को सब पता है लॉ, जितना आप मैं पढ़ाऊंगा और फैकल्टीज पढ़ाएंगी आपको सब आता होगा लॉ जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे. लेकिन अपनी बात कैसे प्रेजेंट करनी है जिससे एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आ जाए, वो आपको फुल मार्क्स दे, that will be discussed in the 10th lecture. Don't worry. Okay, most of you got 10 on 10. Good. आयुषी को 7 समझ में नहीं आया, डिस्कस कर लेंगे 7 एक बार दोबारा बेटा. चलिए स्टार्ट करते हैं कंसीडरेशन. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसीडरेशन? तो फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट लॉ सेज. जस्ट इसको साइड में रखते हैं, लॉ क्या कहता है मतलब समझते हैं. कंसीडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न. ठीक है, सपोज आई ऑफर्ड, I am entered in a contract with Mr. X to sell my car for 2 lakh rupees. मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया मिस्टर एक्स के साथ कि मैं अपनी कार 2 लाख रुपए में बेचूंगा. तो what I am giving my car, what I am getting 2 lakh rupees. So for giving the car, the consideration is 2 lakh for me. ठीक है, मेरे को जो बदले में मिल रहा है वो मेरे लिए कंसिडरेशन है. Now Mr. X is what Mr. X is getting in return, he is getting car. So car is consideration for him. X को जो मिला बदले में, X ने 2 लाख रुपए दिए, मतलब बदले में कार मिली, तो कार उसके लिए कंसिडरेशन. But definition section 2 clause B what says? Section 2 clause B says, when at the desire of promisor, the promisee or any other person has done or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration for promise. Listen, I have mentioned the definition in parts, lines, because these all lines are the essential element for consideration. Consideration should be from the both parties, one getting and second other parties also getting. But at the desire of promisor. For example, there is a contract between me and X. I offered Mr. X to purchase my car for 2 lakh rupees and he agrees. So I am the proposer, X is the acceptor. So my consideration should be according to me. What is the consideration for me? It is 2 lakh rupees. Let's say someone, Mr. Y, says to X, I don't need to give the 2 lakh rupees, just give 1,80,000. And Mr. X gives me 1,80,000 for the car. It is valid consideration? No. मतलब क्या हुआ कि जब मैंने ऑफर किया मिस्टर एक्स को, क्या कहा मैंने उनसे कि भैया मेरी कार 2 लाख रुपए में खरीदोगे? एक्स ने कहा ठीक है सर. तो मेरा कंसिडरेशन क्या है? 2 लाख रुपए. ये 2 लाख वो होने चाहिए कंसिडरेशन, मेरा कंसिडरेशन मेरे अकॉर्डिंग डिसाइड होना चाहिए. मान लीजिए कोई मिस्टर वाई आए और मिस एक्स से बोले कि भैया ऐसा है, सर को 2 लाख देने की जरूरत नहीं है, 1,80,000 तो काम हो जाए. क्या वो वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा? नहीं. तो कंसिडरेशन शुड बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. किसी और के जरिए आ सकता है. लेट सपोज मिस्टर एक्स सेज, सर मिस्टर वाई विल गिव यू द 2 lakh rupees and I'm agree. That is valid consideration. Consideration for doing something in the form of doing something, in the form of not to doing something, we will discuss. So this is the called the consideration, right?
So on the analysis of definition, consideration may be act for doing something. Let's see the example. A guarantees B for payment of the price of the goods which B wanted to sell on 1 month credit to C. Here, selling of the goods on credit by B to C is consideration for A's promise. क्या है एग्जाम्पल? ए ने गारंटी दिया बी को कि आप सी को माल बेच दो क्रेडिट पर 1 महीने, और अगर सी नहीं चुकाएगा तो मैं पेमेंट करूंगा। ए ने बी से क्या कहा कि आप सी को माल बेच दो 1 महीने की उधारी पर, क्रेडिट पर। इन केस बी डज नॉट पे, आई विल मेक द पेमेंट। तो ए प्रॉमिस कर रहा है पेमेंट करने के लिए, तो ए को बदले में क्या मिल रहा है? व्हाट इज द कंसिडरेशन फॉर ए? तो द सेलिंग ऑफ गुड्स बाय बी टू सी इज द कंसिडरेशन फॉर ए। बी के द्वारा सी को माल बेचना ही ए का कंसिडरेशन माना है, राइट? वन मोर एग्जांपल, A college promises student for job in the MNC, all who will secure above 95%. Here, the promise for recruitment of candidate will be considered as consideration for the act of student who scores 95%. Very simple example. Consideration may be in the form of abstinence or forbearances, means not to do something. Example number 3, C promises his debtor D not to file a suit against him if he agrees to pay rupees 10,000 more on the principal amount. Here, the abstinence of C is the consideration for D promise to pay. C ने D से क्या प्रॉमिस किया कि भैया तुम मेरे खिलाफ केस फाइल मत करना, मुझे जो आपको पैसा लौटाना है उसमें मैं 10,000 रुपए और ऐड कर दूंगा। तो C के द्वारा D के अगेंस्ट केस फाइल नहीं करना, सूट फाइल नहीं करना, मुकदमा फाइल नहीं करना, कंसिडरेशन बन गया किसके लिए? सी के लिए 10,000। डी के कंसिडरेशन बन गया, ठीक है। सी केस फाइल नहीं करेगा, डी क्या देगा और क्या करेगा? सी को, डी क्या करेगा? सी को 10,000 रुपए देगा। इतनी बात क्लियर है बच्चे? तो जो डी ने दिया 10,000 रुपए, उसके बदले में क्या मिला? सी के द्वारा डी के अगेंस्ट कोई मुकदमा दायर नहीं करना, तो दैट इज द एब्स्टिनेंस केस। Consideration may be in written promise. Promise in written promise. अब A promises to maintain B's child and B promised to pay rupees 1,000 yearly for the purpose. A ने प्रॉमिस किया कि वो B के बच्चों को संभालेगा और B बदले में 1,000 रुपए साल के देगा। This is the written promise for each other. Now the rules for legal rules regarding the consideration. So we have the 3 topics at this point: legal rules, contract without concession, and the third person in the consideration. Sir, how many guarantee person can have? Anyone, beta? Any number of persons? Sir, when will the commence new scheme for intermediate? I don't know, beta. कब ये information institute publish कर देगा? Don't worry. Pratibha is asking, sir, what is the meaning of abstinence? Abstinence means not to do something, right? आगे बढ़ते हैं. First, consideration must move at the desire of promiser. Must move at the desire of promiser. I have discussed. An act done at the desire of third party is not a consideration. अगर मेरे जो कंसिडरेशन मुझे मिलेगा वो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो हमने तय किया। अगर थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग चेंज होता है कंसिडरेशन वैलिड नहीं माना चाहिए। सी द एग्जांपल, आर सेफ एस गुड फ्रॉम फायर विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो। आर ने एस का गुड जलने से बचाया, लेकिन एस ने तो कभी नहीं कहा था। Whether R can demand any compensation? No. R cannot demand any reward for his service as the act being done voluntary. Right? Consideration, important example and important concept for the examination point of view.
consideration may proceed from the promisee or any other person who is not a party to the contract. यानी कि consideration can be received to me from promisee, acceptor or any other person. In other words, there can be a stranger to consideration but not a stranger to a contract. See the example. An old lady made a gift of her property to her daughter with a direction to pay a certain sum of money to the maternal uncle by way of annuity. On the same day, the daughter executed a writing in favor of the brother agreeing to pay annuity. The daughter did not, however, pay the annuity and the uncle sued to recover it. ये केस था. केस क्या है? Very simple case. An old lady has gifted all her property to her daughter with the condition that the daughter will pay a some annual amount to his maternal uncle, right? Daughter entered into contract with the uncle to pay the annual amount, but actually she did not pay. She gave his views. She gave her views that if I give the annual amount to the uncle, what I am getting in consideration. So if there is no consideration, there is no contract and I am not liable to pay any amount to the uncle. क्या हुआ केस? एक ओल्ड लेडी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी को गिफ्ट कर दी, राइट? साथ में इस कंडीशन, ये कंडीशन लगाई कि आप यानी बेटी अपने मामा जी को हर साल कुछ एक लमसम अमाउंट पे करेगी. सेम डे बेटी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मामा जी के साथ कि ठीक है मैं आपको हर साल इतना अमाउंट पे करूं. इतनी बात क्लियर हो गई. लेकिन जब ड्यू डेट आई तो बेटी ने पेमेंट करने से मना कर दिया और ये बात रखी कि मैं अगर अपने मामा जी को पैसा दे रही हूं तो बदले मुझे क्या मिल रहा है? नथिंग. नथिंग. सो अगर मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? विदाउट कंसिडरेशन. एंड लॉ सेज अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड. बट व्हाट द कोर्ट सेड? Court said that you are not getting the consideration from your uncle directly, but you are getting the consideration from your aunt, your mother indirectly. कोर्ट ने कहा ये जरूरी नहीं है कि आप अपने मामा जी से कंसिडरेशन लें. आपको जो आपकी मदर से मिली प्रॉपर्टी वही कंसिडरेशन है इस कॉन्ट्रैक्ट का. एंड that's why the court said there was sufficient consideration for the uncle to recover the money from the daughter. And this was the very famous case of Chinaya versus Ramaya. ठीक है? क्लियर हो गया? तो कंसिडरेशन जरूरी नहीं डायरेक्टली आए, इनडायरेक्टली कहीं और से भी आता है तो दैट इज अ वैलिड कंसिडरेशन. ठीक है? Next point, the consideration may be present or future, may be executed or executory. See the example. I think this example will clear the concept of present and future consideration. A pays rupees 5,000 to B and B promised to deliver to him a certain quantity of wheat within a month. A pays rupees 5,000 to B and B promised to deliver to him a certain quantity of wheat within a month. A ने B को 5,000 रुपए दिए और B ने प्रॉमिस किया कि वो एक महीने के अंदर गेहूं उनको दे देगा 5,000 रुपए का, राइट? In this case, A pays the amount, whereas B merely makes a promise. A ने तो अमाउंट पे कर दिया लेकिन B ने केवल अपना प्रॉमिस किया है. So consideration paid by A is executed, that is performed, that is present. मिल गया. And the consideration by B is executory, that is recovered in future. क्योंकि एक महीने का टाइम दिया है गेहूं के लिए तो उसको कब मिलेगा? कंसिडरेशन कब मिलेगा? फ्यूचर.
Therefore, the consideration paid by A to B is present, and the consideration which is to be paid by B to A is future consideration, not at the time of contract. Clear? Durga Prasad Baldev Das, we will discuss better. Definitely discuss if time allows. We will discuss the case. Past consideration. A teaches B. Just a moment, Peter. Past consideration means the consideration was already recovered before the entering into contract. सर ये कैसे पॉसिबल है कि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ कंसिडरेशन हमें उससे पहले ही मिल गया, ये पॉसिबल कैसे? और इस तरह कंसिडरेशन को क्या बोलते हैं? पास्ट कंसिडरेशन. सी द एग्जांपल. लेट्स सी ए सपोज लेट्स सी क्वेरी है बच्चे. Suppose Janvi asked to me, sir, please teach me the concept of mercantile law, but I don't have the money, I could not pay. That was discussed on suppose 1st August 2022, and I told Janvi, okay बेटा आप पढ़ो. और जब मैंने उसको पढ़ाया, सपोज एक महीना 2 महीना पढ़ाया, and after जब कंप्लीट हो गया, she entered in the exam in December attempt and she got the good marks. In January, after about 5 to 6 months, in January, she entered in a contract with me that, sir, I will pay the amount of fees for which, for the teaching classes given by you. क्या हुआ? 1 अगस्त को मैंने पढ़ाया. जानवी ने मुझसे कहा, सर मेरे को अभी पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, आप क्या मुझे पढ़ा देंगे लॉ? ना ठीक है बेटा पढ़ लो. दिसंबर में जानवी ने अगस्त में मुझसे पढ़ाई की, दिसंबर में अटेम्प्ट दिया और जब रिजल्ट आया तो वो पास हो गई. और उसने मुझे कांटेक्ट किया जनवरी में 5 महीने के बाद या 6 महीने के बाद कि सर आपने जो मुझे पढ़ाया था उसके बदले में मैं आपको फीस देना चाहती हूँ. व्हाट अबाउट 5000 लेट्स से. ठीक है. Now the contract was entered in the January. Contract was entered in the January, but and the Janvi will pay the amount of the fees in January or after January. But what she is getting, she have already received the classes in the August. So at the time of making the contract, that is January, the consideration received by Janvi is the past consideration. भाई मेरे से कॉन्टेक्ट किया जानवी ने जनवरी में फीस देने के लिए, लेकिन पढ़ तो मुझसे चुकी है वो अगस्त में ही. ठीक है ना? तो जो जानवी तो पे करेगी या उसने मुझे दे रही है अमाउंट, तो वो हो गया कंसिडरेशन प्रेजेंट या प्रेजेंट कंसिडरेशन हो गया. लेकिन जानवी को जो कंसिडरेशन मिला वो तो पहले ही मिल चुका. दैट इज द पास्ट कंसिडरेशन फॉर चाइल्ड. क्लियर? तो सी द एग्जांपल नंबर 8. A teaches B. At his desire, after a week, B promised to pay fees of 2000. A can sue B for recovering the promised money. It means मैं जब उस जानवी ने कांटेक्ट किया मेरे साथ जनवरी में फीस देने के लिए, तो मैं उसे रिकवर करने के लिए सूट फाइल कर सकता हूँ. जानवी मुझसे ये उस समय ये नहीं कह सकती कि सर मैं तो कंसेशन मिला ही नहीं तो मैं फीस दूं. But because Janvi has received the concession in the August just before the entering into the contract. Clear? Sir, in Chinmaya case, there is executed or executory. But if one executory from one part and other part executory, credit sale is the, I think it is the concept of future consideration, right? Because the consideration a contract is entered and consideration is received after the contract. It is a future consideration. Adequacy of consideration. This is an important again point. Law says there must be something in written. Otherwise, contract is not valid.
but nothing here to to give to say that the consideration must be of the equal value. लॉ ये तो कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कंसिडरेशन होना चाहिए, पर क्या बराबर का होना चाहिए, वैल्यू बराबर होनी चाहिए, इस बारे में लॉ ने कुछ नहीं कहा. तो देयर में बी कंसिडरेशन बट नीड नॉट बी एडिक्वेट. लिसन, देयर में बी कंसिडरेशन but there should be consideration but need not be adequate, right? So example number 9, A agrees voluntarily to sell his motorcycle to for rupees 2000 to B. It is valid consideration if there is free consent. A सब कुछ सही है, A कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अपनी मोटरसाइकिल 2000 बेचने में, कहीं कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, तो ये वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा, भले ही मोटरसाइकिल की कीमत 2000 रुपए से ज्यादा. Example 10, X promised to sell a house worth rupees 6 lakh for rupees 1 lakh only. X promised to sell a house worth rupees 6 lakh for rupees 1 lakh only. The adequacy of the price in itself shall not render the transaction void unless the party pleads the transaction take place under coercion undue influence of. अगर एक्स ने प्रॉमिस किया है कि वो 6 लाख का घर 1 लाख में बेचेगा और कोई इस पे कोर्शन नहीं है, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, इन दैट केस इट इज अ वैलिड कंसिडरेशन, राइट? परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म. इट मींस द कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी द परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यूटी. The performance of an act by a person who is legally bound to perform the same cannot be consideration for a contract. First see the example, then we will come to the provisions again. A promise to pay rupees 1000 doctor over the fees is invalid, as it is the duty of doctor to give the treatment for his normal fees. Let's say Mr. X went to the doctor for the treatment and the consultation fees of the doctor is rupees 500 rupees, but doctor demands 1000 rupees over the fees, that is doctor demands 1500, and X agrees to pay, but after treatment X says, sir, your fee is 500 rupees and I will pay only 500 rupees. Whether doctor can recover? क्वेश्चन ये है, एक्स डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट के लिए कहा, डॉक्टर की फीस नॉर्मल फीस थी वो 500 रुपए थी, लेकिन डॉक्टर को लगा यार ये तो बहुत अमीर आदमी है, इससे एक काम करते हैं अपन ज्यादा पैसे मांगते हैं. डॉक्टर ने कहा सब ऐसा है कि आपसे हम 1500 रुपए लेंगे, 1500 रुपए. एक्स ने बोला ठीक है सर, ओके. लेकिन जब फीस ट्रीटमेंट हो गया, फीस देने की बात आई तो एक्स ने मना कर दिया कि मैं तो 500 रुपए. डॉक्टर ने कहा कि अरे आपने तो तय किया है मुझसे, एग्रीमेंट किया है 1500 रुपए का, यू हैव एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू पे द 1500 टू मी, देन व्हाई आर यू डिनाइंग? देन एक्स सेज, सर आई हैव गिवन रुपीस 500 फॉर द ट्रीटमेंट, देन फॉर 1000 व्हाट यू हैव गिवन टू मी, व्हाट इज द कंसिडरेशन टू मी फॉर रुपीस 1000? 1000 के लिए मुझे क्या कंसिडरेशन मिल रहा है? देयर इज नो कंसिडरेशन फॉर 1000, सो डॉक्टर कैन नॉट क्लेम. तो जो आपकी ऑलरेडी ड्यूटी है उसके लिए जो आपको मिल रहा है कंसिडरेशन वही सफिशिएंट है, आप उससे एक्सेस नहीं मांगते. द परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म यू कैन नॉट डिमांड. सपोज इन अ बैंक a staff got salary, but a staff demands money for making the entries in the passbook. And this is the invalid contract. This is invalid, right? Ritu is asking, sir, consideration depends on offer's willingness. Okay. देखिए इस केस में वही हम लॉ में कह रहे हैं बेटा, वही आई एम डिस्कसिंग विद यू कि कंसिडरेशन में should be there, right? But person if taking the benefit he is not allowed. If taking the unusual benefit he is not, right?
Consideration must be real and competent. Real and competent. देखिए क्या कहता है? It must be something to which the law attaches some value. There must be reality. See, a man promised to discover treasure by magic. मैं जादू से यहाँ ढूंढ दूंगा. This is not the valid consideration. The content is not valid, right? One concept is there. एक दो क्वेरी है इस पॉइंट पर, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, देन आई विल कम अगेन द पॉइंट नंबर 7. देखिए, लिसन. If a person is bound by duty and he is getting some consideration for that duty, he cannot claim anything else for that duty. If a staff or bank is getting salary for doing his duty like entry in the passbook, he cannot demand the extra money for the work because he is getting salary for that purpose. And even there is contract for the extra money, the person who is liable to pay the money, extra money, he can deny by the court, he can file the suit, and court definitely give the benefit to the person. Right? आगे बढ़ते हैं. Consideration must be real and competent, capable होना चाहिए. One more example. A agrees with B to put his life in the dead wife. The agreement cannot be enforced as it is not possible to be performed. Consideration must not be that which could not be performed. Consideration must not be that which could not be performed. Consideration ऐसा नहीं होना चाहिए जो perform नहीं किया जाता. Okay. Consideration must not be unlawful, immoral. Immoral means bad character. And opposed to public policy. ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि पब्लिक को कोई नुकसान हो. See the examples. A asks B, I will kill you. I will give you 1 lakh rupees if you kill C. A ने B से कहा कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा अगर तुम C को मार दो. This is the unlawful consideration, unlawful, illegal
बच्चों बस 2 मिनट रुको, बीच में डिस्कनेक्शन हो गया थोड़ा सा, 2 मिनट रुको, मैं ले रहा हूँ क्लास को, 2 मिनट दीजिए मुझे। बेटे मेरे ख्याल से आप सब कुछ दिख रहा है। अब स्क्रीन शो हो रहा है, प्लीज रिप्लाई। ओके, लेट्स स्टार्ट। बच्चों थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया, प्लीज सॉरी, सॉरी फॉर दैट। एंड आई रिपीट this slide 8 point, consideration must not be unlawful, immoral or opposed to public policy. Example number 14, A asks B, I will give you 1 lakh rupees if you kill C. Consideration is illegal. Same way, example number 15, A asks B, I will give you a bottle of wine if you do work for me. This is the immoral work, it is not allowed. Example number 16, A asks B, will you purchase your car for something? Something means not clear. So there is no contract as concession is uncertain. So these were the legal rules. Now time for super over 1, and after that we will have the break of 10 minutes. So ready for super over? Ready for super over बच्चों? अरे एक तो यस बोल दो मेरे लाल, मेरे बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सुपर ओवर, फर्स्ट बॉल, कंसीडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ। अच्छा दोबारा सुन लो, प्लीज लिसन वंस अगेन, ऑल द आंसर शुड बी इन वन शॉट, ठीक है? एंड आई एम सपोजिंग कि ऑल ऑफ यू गिव द ऑल करेक्ट आंसर्स। बहुत सिंपल है आज का सुपर ओवर 1। कंसीडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ promiser, promisee, promiser or any third party, both the promiser and the promisee. Next, consideration must move from the promisee, may move from the promisee or any other person, must move from the third person, may move from the promiser. चलिए next one, consideration in a contract may be past, present or future, may be present or future, may be present, must be future only. Nancy, what are you doing, beta? Please note, don't send the answer one by one. Ankita, please listen. Fourth question. Which of the following are valid consideration? Past, future, present or future?
where an act forming consideration is the performance of existing obligation between the parties, it is regarded that there is no consideration, inadequate consideration, past consideration, none of these. Listen, what is the question? Where an act forming consideration is the performance of existing obligation between the parties. Last, an agreement made with free consent to which lawful consideration is inadequate is void, valid, voidable, and unlawful. So let's discuss the answers. Consideration must move at the desire of promisor. Consideration may move from the promisee or any other person. Consideration in a contract may be past, present, or future. Which of the following are valid consideration? Past, present, or future? Where an act forming consideration is the performance of existing obligation between the parties, it is regarded that there is existing obligation. The answer is no consideration. And the last one is an agreement made with the free consent to which the lawful consideration is inadequate is valid. So let's see who is the lucky one. First one is Shivam. Savan. Second one is Niklesh P. J. Third one is Miss Shweta Pingal. और कौन है भाई? सही आंसर नहीं दिख रहा है मुझे अभी तक. सारे सही हैं. मिस्टर पुरंजय सिंह. Okay. Congratulations all of you. एक क्वेश्चन में इश्यू आना चाहिए. That is the question number 5. बेटे एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन में तो कंसेप्ट है ना, अगर कोई चीज एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन के लिए दी जाएगी तो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा. एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन के लिए नो कंसिडरेशन, राइट? So congratulations to everyone who got all the correct answers. Inadequate means sufficient. Inadequate means sufficient, right, बच्चों? So at this place we will have the break of 10 minutes. Mr. Nisar,
Can you hear me? Mr. Nisar, टेक्निकल डिपार्टमेंट से। Mr. Nisar, can you hear me? Please give the break of 10 minutes to the students. Okay, student, I think technical department is not here. So you can take the break of 10 minutes. Okay, we will meet after 10 minutes.
सर मैं तो आपको बहुत देर से कॉल कर रहा था, बीच में डिफेक्ट वो टेक्निकल आगे दिक्कत आ गई थी, आप थे ही नहीं, अभी तक मैंने कॉल किया आपको। हाँ आप सर रहा करो, सामने में दिक्कत आएगी तो मैं कॉल करता हूँ, आपको आवाज लगाता हूँ, पहुंच नहीं पाती मेरी आवाज। ठीक है स्टार्ट करें। ठीक है ओके लेट्स स्टार्ट। सो now we are discussing the suit by a third party to contract. Normally we discuss that the party who is not in a contract cannot file the suit, but in consideration there are some exceptions where even a stranger can file the suit. So see, a stranger to a contract cannot sue is known as doctrine of privity of contract. Let's see the example. P has taken a loan from Q. P has taken loan from Q. P sells his property to R and R promised to pay off the debt amount to Q. And if R fails to pay, then in such situation, Q has no right to sue as R is a stranger to contract. क्या है केस? P ने लोन लिया Q से और P ने अपनी प्रॉपर्टी R को बेच दी और R ने कहा भैया मैं लोन चुका दूंगा तेरा, चिंता ना कर। अगर R लोन नहीं चुकाता है तो Q R से क्लेम नहीं करेगा, Q अगेन P से ही क्लेम करेगा, because R कौन है? Stranger to a contract. But there is some exception to the rule of doctrine of privity of contract. It means in these cases, even a stranger to a contract may enforce a claim in the following cases. See, in case of trust, a beneficiary can enforce his right under the trust, though he was not a party to the contract between the settler and the trustee. So, first to understand, before understanding the concept of trust, we should understand the example. See, what is the example? Mr. X transfer his property to his friend in trust in favor of his son. And on the death of Mr. X, friend refuses to give the benefit to son. Now son can claim from the X even he was not a party to contract. क्या केस है ये? मिस्टर एक्स ने एक ट्रस्ट बनाई और अपनी सारी प्रॉपर्टी उस ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दी और ट्रस्ट का ट्रस्टी किसे बनाया? फ्रेंड को। फ्रेंड को ट्रस्टी, ट्रस्टी मतलब जो देखभाल करता है इसका, राइट? और ये किसके फेवर में है? बेटे के फेवर में। इसका मतलब है कि वो प्रॉपर्टी का बेनिफिट किसे मिलेगा? बेटे को। एक्स ने अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट बना के ट्रांसफर कर दी ट्रस्ट में और इसका ट्रस्टी बनाया इसको, उनके फ्रेंड को, और बेनिफिशियरी कौन? सन। यानी कि इसका मतलब कि उस प्रॉपर्टी का सारा बेनिफिट किसे मिलेगा? बेटे को मिलेगा, राइट? एंड ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर एक्स, जब डेथ हो गई मिस्टर एक्स की, तो फ्रेंड ने बेनिफिट देने से मना कर दिया। क्वेश्चन राइज whether son can claim even if he is not the party to contract. Actually, originally contract was entered between Mr. X and his friend. Son was not in the contract. But in this case, this is the exception to the rule, privity of contract. But in this case, son can claim the benefit because he is the beneficiary of the contract, can claim the benefit even if he was not a party to the contract. क्लियर है बच्चों इतनी बात? नेक्स्ट, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, family settlement, see, if the terms of the settlement are in writing, the members of the family who originally had not been parties to the settlement may enforce the agreement. See the example. I think this concept will be very much clear to you. A father has transferred
all his property to his two sons on the condition that each of them will pay 10,000 to their mother. The agreement was entered between father and the sons that the son will pay the 10,000 per month to the mother. And in this case, all the property has transferred by father to the sons. Now, if the son refuses to pay the money, mother can claim even she was not in the contract. Clear? फादर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी दो बेटों को ट्रांसफर कर दी इस कंडीशन के साथ कि बेटे दोनों मिलकर 10,000 रुपए महीना मदर को देंगे, 10,000 रुपए मदर को देंगे। अगर बेटे रिफ्यूज करते हैं देने से तो माँ भले ही उस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी ना हो बट वो क्लेम कर सकती है। क्लियर बच्चे? इन केस ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, लॉ सेज in case of certain marriage contracts, a female member can enforce a provision for marriage expenses made on the partition of HUF. लॉ कहता है कि अगर कोई फीमेल मेंबर है और हिंदू अनडिवाइड फैमिली है तो लॉ में के अकॉर्डिंग वो अपने शादी के सारे खर्चे क्लेम कर सकती है अगर सारा जो फैमिली है वो डिवाइड हो रही है, बट नहीं है। In case of assignment of contract, please mark assignment means transfer of contract. Where the benefits under a contract has been assigned, the assignee can enforce the contract. अगर benefit assign कर दिए गए हैं, transfer कर दिए गए हैं, तो जो transfer है वो claim कर सकता है। See the example. Mr. A assigned his insurance policy to his son. Now son can claim even if he was not a party to contract. एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ मिस्टर ए और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में और वो इंश्योरेंस पॉलिसी मिस्टर ए ने अपने बेटे को असाइन कर दी, ट्रांसफर कर दी, इसके बेनिफिट मेरा बेटा लेगा। नाउ बेटा भले ही पार्टी नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट में, जो कॉन्ट्रैक्ट ए और इंश्योरेंस मिस्टर ए और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में हुआ था, फिर भी वो सारे बेनिफिट क्लेम कर सकता है। क्लियर? Sir, how third party comes to know about the contract, sir? Mr. Pranay, you are asking how third party comes to know about contract. आप प्लीज, मैं थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा किस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं। थर्ड पार्टी को अगर इंफॉर्मेशन है, देखिए हम यहाँ बात कर रहे हैं, अच्छा जैसे आप बात कर रहे हैं फैमिली सेटलमेंट की, ओके, इफ यू आर आस्किंग अबाउट फैमिली सेटलमेंट की मदर, हाउ मदर विल नो दैट शी हैज द राइट, तो डेफिनेटली वी आर हियर टू डिस्कस द लॉ। तो मदर को मालूम होगा तभी वो क्लेम कर सकती है। कैसे मालूम होगा ये हमें लॉ में डिस्कस नहीं करना। इसमें नॉर्मली क्या होता है ना, फादर विल इन्फॉर्म द वाइफ, देखिए मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने दो बेटों ट्रांसफर कर रहा हूँ और तुम्हें भी कुछ देंगे, वो मैंने लिख दिया है कि तुम्हें 3 महीना मिले, ठीक है। थर्ड का एग्जाम्पल बता दीजिए। ऋतु इज आस्किंग बेटा थर्ड में सपोज ये एक्चुअली क्या है ना, दिस इज नॉट अ वेरी मच क्लियर कंसेप्ट, बट नॉर्मली हिंदू इन केस ऑफ हिंदू अनडिवाइड फैमिली, अगर देखिए हिंदू अनडिवाइड फैमिली क्या होती है, HUF कि पिता के बाद पिता की HUF में कौन कौन होगा अनडिवाइड फैमिली में, वो उनकी वाइफ, उनके बेटे, ये सब उनके पार्ट है। बेटी HUF का पार्ट होती है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती है, क्योंकि शादी होने के बाद वो किसी और की HUF का पार्ट है, राइट। अब मान लीजिए मिस्टर एक्स की HUF है, अनडिवाइड फैमिली है, उसमें क्या है, फादर हैं, मिस्टर ए हैं, उनकी वाइफ है, बेटे हैं, बेटों की शादी हो गई, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने क्या किया, बेटों की HUF अलग कर दी, बेटों को अलग कर दिया। तो जो बहू है, बेटे की वाइफ है, वो जो खर्चे उसको गिफ्ट मिले थे वो सारे क्लेम कर सकती है अपने एट द टाइम ऑफ डिवाइडेशन, भले ही वो पार्ट नहीं थी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ईशा इज आस्किंग सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असाइनमेंट। बेटे असाइनमेंट मीन्स ट्रांसफर, मैंने डिस्कस किया ना, ये सपोज मान लीजिए मैंने अपनी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो अपने बेटे को दे दी, बेटे के नाम कर दी, बेटे को नॉमिनी बना दिया, तो अगर मुझे कुछ हो जाता है तो बेटा मेरा बेनिफिट सारे क्लेम कर सकता है क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट उसके नाम असाइन कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी बाद में ये नहीं कह सकती कि सर कॉन्ट्रैक्ट तो आपसे हुआ ही नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट तो मिस्टर सुधीर जैन से हुआ था, ठीक है। Sir, we have, Janvi is asking, sir, we have to explain facts of the case law. No, you have, I will discuss, beta Janvi, please wait. On 10th lecture, I will discuss how to present the case. ठीक है?
In case of estoppel by acknowledgement of liability, एक्नॉलेजमेंट लाइबिलिटी को अगर आपने एक बार एक्सेप्ट कर लिया, वंस यू हैव एक्नॉलेज द लाइबिलिटी यू कैन नॉट डिनाई आफ्टरवर्ड्स. In case of an estoppel by acknowledgement of liability or part performance thereof, there is when one admits the liability. Suppose L gives to M rupees 2000 to be given to N, and M informs N that he is holding the money for him, but afterwards M refuses to pay the money. N will be entitled to recover the same from the former. What point number 5 says? Point number 5 says that if you accept or acknowledge the liability, you cannot deny afterwards. What was in the example number 21? L gives money of rupees 2000 to M, which is to be given to N. And M informs N that I have the money to pay you 2000 rupees. It means M has accepted or admitted the liability. Afterwards, M cannot deny. जब आपने लाइबिलिटी को एडमिट कर ली है तो आप उसे बाद में डिनाई नहीं कर सकते. एस्टॉपल मींस टू स्टॉप. इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इन केस ऑफ एस्टॉपल बाय एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी, इट मींस इफ यू हैव एक्नॉलेज द लाइबिलिटी यू कैन नॉट बी स्टॉप्ड फॉर डिफरेंट फ्रॉम द लाइबिलिटी. अगर आपने एक बार लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर ली तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, आप अपने आप को रोक नहीं. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय एजेंट. एजेंट में क्या होता है? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एजेंसी? प्रिंसिपल अपॉइंट वन पर्सन. लेट्स से आई अपॉइंट माय सन टू परचेज सम गुड्स फ्रॉम द शॉप. सन गोज टू द शॉप एंड परचेज. द कॉन्ट्रैक्ट वाज एक्चुअली एंटर्ड बिटवीन सन एंड द शॉपकीपर, but I am the liable because son is working on my behalf. Even I am not the contract. I am not in the contract. See, okay. भाई मैंने अपने बेटे को अपॉइंट किया कि भैया तुम जाओ मेरे बिहाफ पे तो सामान खरीदाओ दुकान से. कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होगा? मेरे बेटे के बीच में और दुकानदार के बीच में. लेकिन लायबल कौन होगा? कॉन्ट्रैक्ट मैं. क्यों? क्योंकि वो मेरे बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट. इवन मैं उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं. So principal can enforce the contract entered by his agent where agent has acted within the scope of his authority and in the name of the principal. Clear? Isha is asking, I think ये clear हो गया बच्चों. आगे बढ़ते हैं. एक एग्जाम्पल देख लीजिए फिर मैं ईशा की प्रॉब्लम देता हूँ. P appoints A as his agent to sell his house. A sells house to T. Now P has a right to recover the price from T. Actually, the contract was entered from between A and T, but even that P can recover the price from T. Okay. Isha is saying, sir, estoppel means to do react because the person contract is known. Am I right? I think थोड़ा सा change है. Estoppel means stop to avoid the liability if you have accepted. सिंपल सा फंडा है. अगर आपने एक बार लायबिलिटी एक्सेप्ट कर ली तो यू आर, तुमको स्टॉप किया जाता है, तुम उस लायबिलिटी से बच नहीं. यू हैव टू पे. राइट. एग्जांपल 21. आयशा देखिए प्लीज लिसन. एल ने एम को इन्फॉर्म किया. एल ने एम को 2000 रुपए दिए जो एन को देने थे. एल ने एम को 2000 रुपए दिए जो एन को देने थे और एम ने एन को इन्फॉर्म कर दिया कि वो 2000 रुपए मेरे पास आ गए हैं. लेकिन बाद में अगर एम रिफ्यूज करता है तो एन उससे क्लेम कर सकता है. ठीक है. क्लियर हो गया 5th नंबर बेटा? रितु अब आपको भी क्लियर हो गया होगा होपफुली. इन केस ऑफ covenants running with the land, covenants you can say the restrictions, कुछ conditions. See what is the point number 7. In case the covenants running with the land, the person who purchased land with the notice that the owner of land is bound by certain duties affecting land, the covenant affecting the land may be enforced by the successor to sell of the seller. See the example, then we will again read this 7th point. Example number 23. One owner of the land having two land adjacent to each other. Adjacent मतलब जो जुड़े हुए थे लैंड एक दूसरे से. One was agricultural land
and he sold the other land containing a condition that it can never be used for industrial purpose so as to protect the other agricultural land from pollution. Such condition is attached with the land, and so whosoever is the successor of the land, who will accept the land, has to abide by it. Abide by it means has to follow the condition. Such are called restrictive covenants, and all successors are bound to it. क्या केस है ये? एक आदमी था, उसके पास दो टुकड़े थे लैंड के जो जुड़े हुए थे. उसने एक टुकड़ा बेच दिया, लैंड बेच दिया, लेकिन पहले पार्ट में वो एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करेगा. और ये कंडीशन लगा दी उसने जिसको बेचा कि भाई आप बेच रहे हो तो बेच दो, लेकिन फ्यूचर में कभी भी ये इस जो सेकंड लैंड है इस पे कभी भी इंडस्ट्रियल पर्पस से कोई काम नहीं होगा, अगर क्योंकि इससे पॉल्यूशन होगा और एग्रीकल्चर खराब हो जाए, खेती बाड़ी खराब हो जाए. तो ये क्या था? रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट, रेस्ट्रिक्शन थी. ठीक है. अब जब भी जो खरीदेगा उस सेकंड पार्ट को, उसे ये फॉलो करना पड़ेगा कि उस लैंड पे वो इंडस्ट्री नहीं लगाएगा. नाउ कम टू द 7th नंबर पॉइंट. इन केस ऑफ कॉवेनेंट्स रनिंग विद द लैंड, रेस्ट्रिक्शन कोई लैंड के साथ है, द पर्सन हु परचेज है, जो परचेज कर रहा है, विद द नोटिस दैट द ओनर, जो उसे मालूम है कि जो ओनर है उस पर कुछ ड्यूटीज थी, तो वो ड्यूटी जो लैंड का सक्सेसर है, यानी जो लैंड को अचीव कर रहा है, जो खरीद रहा है, उसे भी वो फॉलो करनी पड़ेगी. Covenants, आशुतोष, covenants means restrictions. Normally you can say the restrictions, conditions. क्या समझ निकल गया इसका मतलब? अगर कोई लैंड खरीद रहा है और उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, ओनर उसको बताता है, तो जो खरीद रहा है उसे भी वही रेस्ट्रिक्शन फॉलो करनी पड़ेगी. ठीक है. Manish is asking something. Principal has knowledge of the contract if contract made by the agent. देखिए, प्रिंसिपल के बिहाफ पे तो एजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल नॉलेज होगी कि एजेंट उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. मान लीजिए प्रिंसिपल ने एक लेटर बना के दिया, अथॉरिटी लेटर, एजेंट को कि आप 1 लाख रुपए का माल खरीद सकते हैं, राइट. अगर एजेंट 1 लाख की जगह 1,20,000 का माल खरीदता है, तो 20,000 के लिए एजेंट पर्सनली लायबल होगा और 1 लाख के लिए प्रिंसिपल. ठीक है बेटे. अबाइड बाय इट मींस फॉलो करना पड़ेगा, उन्हें भी ये बातें माननी. Now the last concept, last topic is validity of agreement without consideration. Normally we have discussed that any agreement without consideration is void, but there are some exceptions, specific exceptions in the law, that in following cases the contract even without consideration is perfectly valid. The general rule is that an agreement made without consideration is void, section 25 says. But however, in the following cases, the agreement though made without consideration will be valid and enforced. आगे बढ़ते हैं. C. First, Mr. Lalit Mohan is saying, sir, if he not tell about selling land condition, okay. ललित मोहन कह रहे हैं कि अगर वो बताता ही नहीं है ओनर की कंडीशन है, तो इस केस में नॉर्मली क्या होगा मेरे हिसाब से, जब रजिस्ट्रेशन कोई इस पे क्लेम करेगा जो सक्सेसर है, तो बताएगा तो मुझे बताया नहीं गया था. पहले तो उसे इन्फॉर्म, पहले तो उसे प्रूव करना है कि जो ओनर था उसने इसको कंडीशन को नहीं बताया, और ये प्रूव हो जाती है तो उसके बाद जो भी नुकसान होगा वो ओनर पे करेगा, राइट. आई थिंक प्रणय और ललित दोनों को आंसर मिल गया. फर्स्ट पॉइंट, नेचुरल लव एंड अफेक्शन. प्लीज लिसन. अ रिटन एंड रजिस्टर्ड, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों. रिटन एंड रजिस्टर्ड, रिटन है रजिस्टर्ड नहीं है, तब भी ये एक्सेप्शन नहीं लगेगी. इट मस्ट बी रिटन एंड रजिस्टर्ड. अंडरलाइन कर लीजिए. Agreement based on account of natural love and affection between the parties standing in near relation to each other is enforceable even without consideration. Means consideration नहीं होने के बावजूद. देखिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी सिस्टर को प्रॉमिस किया कि आई विल गिव यू द माय फ्लैट एज ए गिफ्ट, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ माय नेचुरल लव एंड अफेक्शन टू माय सिस्टर. तो
sister can claim the flat only in that case, that agreement, my promise, it should be written and registered in the concerned law court. मेरी सिस्टर जब भी क्लेम कर सकती है कि वो अगर एग्रीमेंट रिटन में हो और उसको रजिस्टर्ड कराया गया हो कोर्ट में. अगर रिटन है, रजिस्टर्ड नहीं है या रिटन भी नहीं है, तो सिस्टर क्लेम नहीं कर सकती. क्लियर बेटे? सी द एग्जांपल. A husband by a registered agreement promised to pay his earning to his wife. Here, the agreement, though without concession, was valid. Right? Listen, if we go to the case of Balfour versus Balfour, if the agreement was written and registered as per Indian law, then wife can claim. Right? Now, compensation for past voluntary services. We have discussed the past consideration. The purpose to discuss this point at this concept at this point again, because at the time of making the contract there was no consideration, because consideration was received in the past. ठीक है, तो ये पॉइंट को हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, पर कुछ कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. A promise to pay for the past voluntary services will be binding. The following factors must exist. First, the service should have been rendered voluntarily. यानी कि जानवी ने रिक्वेस्ट किया मुझसे तो मैंने वॉलंटरी सर्विस पे कर दिया. ऐसा नहीं जानवी डरा के मुझे कहा गन रखिए ऐसा पढ़ाओ, मुझे नहीं पढ़ाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए. The services must have been rendered for the promiser. यानी कि मैंने जिसको सर्विस प्रोवाइड करी है, प्रॉमिस मुझे वही करेगा पेमेंट करने. ठीक है. द प्रोमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन द सर्विस वर रेंडर्ड. कि एक बड़ा अच्छा पॉइंट है सर, प्रोमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन द सर्विस वर रेंडर्ड. सर हाउ इज इट पॉसिबल कि आपने सर्विस रेंडर्ड कर दी उस समय वो दुनिया में ही नहीं था? तो सी द एग्जांपल. We can take example. Suppose एक लेडी है मैडम ए और वो प्रेग्नेंट है. उनकी जो देखभाल की किसी नर्स ने की. जब बच्चे का दुनिया में जन्म हुआ, दुनिया में आया, बड़ा हो गया, तो उसने प्रॉमिस किया कि आपने जब मेरी मदर की देखभाल की थी तो मैं सब पेमेंट कर रहा हूँ. दिस इज नॉट वैलिड बिकॉज एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज द सन और डॉटर वाज नॉट इन द एग्जिस्टेंस. ठीक है. The promiser must have been intended to compensate the promise. उसकी इच्छा होनी चाहिए कि जो मेरे लिए किया गया उसको मैं कॉम्पनसेट करूं. तो चार बातें आ गई बेटे. पहली बात, सर्विस वॉलंटरी गई हो, प्रॉमिसर के लिए ही गई हो. तीसरा, प्रॉमिसर जिस समय सर्विस ली गई है उस समय प्रॉमिस दुनिया में होना चाहिए. और तीसरा, प्रॉमिसर की इच्छा होनी चाहिए कि जो मुझे मेरे लिए इसने काम किया उसका मैं से कॉम्पनसेशन दूं हर जाना. राइट. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइंडिंग? बाइंडिंग मतलब उसको बाइंड करना, मतलब कह सकते हैं कि इस पर फोकस, उस पर वो बंध गया, उसको फॉलो करना पड़ेगा. वॉलंटरीली मीनिंग प्रतिभा, वॉलंटरी मीनिंग मीन्स विद ओन डिजायर विदाउट एनी प्रेशर. राइट. द हस्बैंड हैव टू मेक एफिडेविट. नो, एफिडेविट इज जस्ट वन. मेरे ख्याल से एफिडेविट क्या है? वन वे डॉक्यूमेंट है, वन पर्सन डॉक्यूमेंट है, वन साइड डॉक्यूमेंट. एक आदमी अपनी कसम खा के कह रहा है, दैट इज नॉट, दैट शुड बी एग्रीमेंट. एफिडेविट क्या है? एक आदमी शपथ ले रहा है, गीता पर याद रखिए, गीता कोर्ट के सामने कि मैं ये प्रॉमिस करता हूँ, ये ऐसा करूंगा. दिस इज वन साइडेड एग्रीमेंट. दिस इज नॉट, एफिडेविट इज नॉट देयर. इट शुड बी अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट शुड बी रिटन एंड रजिस्टर्ड. सी द एग्जांपल. P finds R's purse and gives it to him. R promises to give P rupees 1,000. This is a valid contract, right? Pranay is saying, sir, can we say voluntary as free consent? Yes. Balaji is saying, sir, rendered means provide, to provide. Rendered means to provide. One more example. Mr. X had helped his nephew, Mr. Y, to fight a case in the court of law using his knowledge and intellect. After Mr. Y won the case, he promised Mr. X to pay 10,000.
here this is a valid contract as it is a compensation for the past service. एक्स ने अपने नेफ्यू की मदद की वाई की किसी केस में, ठीक है, बाद में वाई जब केस जीत गया तो उसने प्रॉमिस किया 10,000 देने का, दिस इज द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। ईशा रेंडर्ड मींस बेटा टू प्रोवाइड समथिंग, ठीक है। Lalit is asking, sir, if a person married a girl, then he is abided by her care and health. I think this is not a part of the contract. This is the normal चीज है, ये normal बात है कि कोई शादी कर रहा है तो इसे ध्यान रखना है, ये सब चीज नॉर्मल है, बट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं, लॉ ने ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं किया इस बारे में। Promise to pay time bar debt. Remember time bar, the debt which has passed 3 years, time barred by limitation 3 years, 3 साल हो गए हैं, the payment नहीं किया है तो claim नहीं कर सकते। Let's say Mr. X has taken a loan from Y of 5,000 rupees. सुन लीजिए ध्यान से बच्चों। Mr. X has taken a loan of 5,000 rupees from Y, and the loan become time barred because next 5 years X not demand Y not demanded any part of money from X, and loan become time barred. X ने Y से 5,000 रुपए लिए लोन के रूप में और 5 साल तक Y ने से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो लोन क्या होगा, टाइम बार्ड, अब Y से क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन क्या हुआ, व्हाट हैपेंड आफ्टर 5 years X realizes that he has made a mistake and he promised in writing to Y that he will pay rupees 4,000 only for full settlement. Now he is bound, he has to pay 4,000. Mr. Y can claim 4,000. So if a promise to pay a time bar debt without concession is perfectly valid, but for which amount, that is should be in document, and this promise should be in writing. If it is oral, no one can claim. Where a promise in writing signed by the person making it or by his authorized agent is made to pay a debt barred by limitation, it is valid without concession. See the example. A is indebted to C 6,000, but the debt is barred by Limitation Act. A signs a written promise now to pay 5,000 in final settlement of the debt. This is a contract without concession but enforceable. Clear इतनी बात? क्या कह रही हैं मुकेश, क्या कह रहे हैं मुकेश, कह रहे हैं सर 3 साल पहले करना पड़ेगा क्लेम, 3 साल से पहले क्लेम करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करते तो टाइम बार्ड हो जाएगा, राइट। Mayank, beta, sir, how to prepare practical question? I've told you many times, again and again. I will discuss in test lecture. Please wait, beta. Sir, Shweta is saying, sir, this is the recovery of bad debt. Yes, you can say. Indebted means liable. Agency. In case of agency, law says, section 185 says, there is no concession required for the creation of agency. यानी कि अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया विदाउट कंसिडरेशन तो एजेंट क्लेम नहीं कर सकता। कंप्लीटेड गिफ्ट, गिफ्ट कंप्लीट गिफ्ट मींस गिफ्ट गिवन एंड एक्सेप्टेड। इन केस ऑफ कंप्लीटेड गिफ्ट द रूल no consideration, no contract does not apply. In case of gift, consideration is not required. Mr. A has gifted a car to his friend on his marriage. Now Mr. A cannot take back his car even if there was no consideration. Rahul, send your mail. आपको मुझे एक मैसेज मिला है राहुल, I have received only one message from your side. Sir, my message are visible. बस एक ही मैसेज दिख रहा है बेटा मुझे अभी। आपकी क्वेरी आप प्लीज आप मुझे भेज दो। Ritu, I am not understanding what you want to ask. क्लियर करो बेटा, किस चीज की बात कर रहे हो आप? Charity, दान देना. If a promise undertakes the liability on the promise of the person to contribute to charity, there is a valid contract. See the example. This is very much an important example for the examination point of view. I think
there may be a question from this point. Mr. A promised the secretary of the committee of temple to donate rupees 1 lakh for revocation of that temple. Okay. Mr. A promised the secretary of the committee of temple to donate 1 lakh rupees for renovation of the temple. On the faith of the promise, secretary has incurred some cost for renovation. Now secretary can claim from Mr. A even the content was without consideration. क्या हुआ? A ने मंदिर के सेक्रेटरी से प्रॉमिस किया कि मंदिर के बनाने के लिए वो पैसा 1 लाख रुपए देगा, और इस विश्वास पर सेक्रेटरी ने कुछ सामान खरीद लिया, बाद में जो A था उसने देने से मना किया. Now secretary has the right to claim the amount even without a consideration, right? Bailment, इससे पहले एक पॉइंट है, ललित मोहन आर सेइंग सर जैकलिन फर्नांडिस केस ऑफ गिफ्ट. बेटा मुझे नहीं पता कौन सा केस है, सॉरी सर. 50,000 से ज्यादा गिफ्ट नहीं कर सकता. आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स एक्ट. ठीक है, तो वी आर नॉट हियर टू डिस्कस अबाउट इनकम टैक्स एक्ट. मुझे आज पता भी नहीं है प्रॉपर, तो आप प्लीज इसको वहां पे चेक करिए. सर रितु इज आस्किंग दैट इन टाइम बार डेट एनी पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज मेंशन्ड. अच्छा बेटा, in case of limitation act, the time limit is mentioned for each and every type of contract, but normally it is in mostly cases it is 3 years, right? Now the bailment is also a case where consideration is not required. See, no consideration is not required for a bailment. Now question is, what is the bailment? The bailment meaning, the meaning of bailment, listen, to give something to someone, to give something to someone for a specific purpose or for a specific period. To give something to someone for a specific purpose or for a specific period, and after that, after the accomplishment of purpose or after the expiry of period, that something will be written back to the original owner. क्या है? किसी के द्वारा किसी को कोई चीज देना किसी उद्देश्य के साथ या किसी टाइम के लिए, और टाइम खत्म होने पर या उद्देश्य पूरा होने पर वो चीज को वापस मिल जाएगी, इसे बेलमेंट. जैसे कि आपने अपने दोस्त को बुक दी पढ़ने के लिए, लाइक यू हैव गिवन योर बुक टू योर फ्रेंड फॉर स्टडी एंड आफ्टर द एग्जाम द बुक विल बी रिटर्न टू यू. ठीक है, तो बेलमेंट मीन्स समथिंग मे बी विदाउट कंसिडरेशन, टू गिव समथिंग टू समवन for a specific purpose, and after that it will be returned to the original owner. No consideration is required to affect the content of bailment. Section 148 of the Indian Contract Act 1872 defines bailment. A bailment is a delivery of the goods by one person to another for some purpose, and upon a contract that there shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to direction of the person delivering. For example, lending a book to a friend for his use without any charge. It is a valid contract, right? Okay, sir, charity फिर से explain कर दीजिए. Charity does not require writing or registration. No, in case of charity there is no requirement of writing or registration. Charity means if any, example 300 हो गया, 30 की जगह पर. Charity means if anyone promised to give the charity and on that promise the person who will receive the charity has paid some expenses, he can claim. आपने प्रॉमिस किया मंदिर में 1 लाख पे दान देने के लिए, राइट? और मंदिर के पुजारी जी ने आपकी इस बात पर सामान खरीद लिया ये काम कराने के लिए. अब बाद में आप मना नहीं कर सकते, आपने अगर प्रॉमिस कर दिया है तो आपको, राइट? अब क्लियर हो गया चैरिटी? सार्थक बेटा मैंने कहा ना, वो 300 एग्जाम्पल में 300 रॉन्गली प्रिंट हो गया, इट इज 30. क्लियर बेटा? आई थिंक 29th एग्जाम्पल क्लियर हो गया कि ए ने प्रॉमिस किया मंदिर के सेक्रेटरी को या कहते हैं पुजारी को
कि भैया मैं डोनेट करूंगा 1 लाख रुपया मंदिर के रिनोवेशन के लिए, और इस प्रॉमिस, इस फेथ पर उसने सेक्रेटरी ने सामान खरीद लिया। बाद में ए ने अगर मना किया तो सेक्रेटरी कोर्ट में जाके क्लेम कर सकता है, राइट। चैरिटी मीन सिंपल एनपीओ नहीं, एनपीओ मे बी द चैरिटी, चैरिटी मे बी डिफरेंट। चैरिटी मीन्स यू गिव समथिंग। सर, if he does not return the goods after accomplishment of for the purpose, then what I can do? रितु इज आस्किंग, रितु ने क्या किया, अपनी बुक दे दी अपने फ्रेंड को पढ़ने के लिए, और उसने कहा मुझे एग्जाम से 1 महीने पहले बुक वापस कर देना। उन्होंने कहा मैं कर दूंगा, लेकिन एग्जाम के उसने बुक वापस नहीं की फ्रेंड ने। रितु क्या करेगी? रितु कोर्ट में जाएगी, क्लेम करेगी, बस सिंपल द फंडा। सो दिस इज द टाइम ऑफ सुपर ओवर 2। स्टार्ट करते हैं बच्चों, फिर आप लोग फ्री होते हैं, चाय वाय पीजिए, नाश्ता कीजिए, और क्वेश्चन सुपर ओवर 2 को जवाब दे दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें, अलाउड। बोलो बच्चों, और कोई क्वेरी है? स्टार्ट करूं? ओके, चलिए। एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वैलिड when made out of love and affection, due to near relationship, to pay time bar debt, to compensate a person who has already done voluntarily, all of the above. Which of the following is not an exception to the rule no consideration, no contract? Not an exception. Which is not included in the exception? Love and affection, compensation for vast voluntary services, contract of agency, none of the above. Which is not included? Which is the right option? You have to select the right option, बच्चों। ध्यान से राइट ऑप्शन बताना है आपको। नेक्स्ट, Rahul is indebted to Sameer. He sells a trolley to Chaman. Chaman promises Rahul to pay all his debt to Sameer. If Chaman fails to pay, Sameer has no right to sue Chaman because Chaman is stranger to contract, Chaman is stranger to consideration, both of the above, none of the above. You have to select the right option, बेटे, गलती मत करना। The general rule is that an agreement made without consideration is void, given in section 23, 24, 25, 26. An agreement is void, voidable, illegal, valid if consideration furnished by the stranger. Last, a person who is not the party to contract but in whose favor some trust or charge under the some specific property is created can sue, cannot sue, can sue with court permission, can sue with permission of other parties. So this was the super over, बच्चे मेरे। आंसर्स पे आते हैं। सुपर ओवर 1 ही क्यों हो गया? 2 था, ये तो गलती से आ गया बेटे। An agreement without consideration is valid when made
All the 3 points are correct. So answer is D. Next, which of the following is not an exception? तो भैया इसमें तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, क्योंकि लव एंड अफेक्शन भी है, कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज भी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी है, तो तीनों हमारे सही हैं। जो तीनों क्या है, ए बी सी, तीनों आर द पार्ट ऑफ द एक्सेप्शंस ऑफ द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो द राइट आंसर इज नन ऑफ द। ठीक है, नेक्स्ट, Rahul is indebted to Samir. He sells a trolley to Chaman. Chaman promises to Rahul to pay all his debt. If Chaman fails to pay, Samir has no right to sue Chaman because Chaman is stranger to contract. Stranger to contract आएगा बेटे। नेक्स्ट सेक्शन तो बहुत सिंपल सा था, सेक्शन 25। An agreement is valid if concession furnished by the state. Perfectly. Last, a person who is not the party to contract but in whose favor some trust or charge under some specific property created can sue. Right? So who is the lucky one? First one is Shivam, son. Next one is Mr. Rahul Patel. Congratulations बच्चों। Miss Raftunisa. This is third one who give all the correct answer. Miss Ritu Tiwari. Congratulations बच्चों। And the fifth one is Miss Aishwarya. So congratulations all of you. I think all of you have enjoyed the topic. Remember, it is very easy topic. Please revise. Enjoy the class, hopefully, and we will meet in the next class for unit 3. ठीक है बच्चों? Okay, and all the best. Thank you so much. मिलते हैं next class में बेटे. Okay, please. Bye bye. निसार जी क्लास ऑफ कर क्लोज कर दीजिए। निसार जी, कैन यू हियर मी? मिस्टर निसार, निसार जी, आर यू गेटिंग माय वॉइस? मिस्टर निसार, ओके बच्चों, मैं लीव कर रहा हूँ क्लास को। थैंक यू सो मच एवरीवन।